Hello guys, welcome to my channel DeepSync44. In this session, we are going to discuss about lambda expression. What is lambda and how it works and what are the syntax. So basically, हम इसमें अभी क्या करने जा रहे हैं, lambda expression पे डिटेलिंग करने जा रहे हैं कि क्या होता है lambda expression. ये JDK 1.8 में इंट्रोड्यूस हुआ, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके सिंटेक्स क्या होते हैं, एटसेट्रा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके कुछ पॉइंट्स पे. So let's go to my blog and select and here is a core Java. Click on this. So here is a topic that name is interface and abstraction, right? Click on this, and now here is interface and abstraction in Java. Basically JDK 1.7 features are introduced over here, so we are not going to discuss about it. We are just going to discuss about it JDK 1.8 features including in this interface. So in an interface you can define a non-static method using default keyword. जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जो JDK 1.8 में इंट्रोड्यूस हुआ है आपका, कि अब हम इंटरफेस के अंदर पहले सिर्फ डिक्लेरेशन मेथड ही रख सकते थे, बट अब हम लोग इसमें डिफाइन मेथड भी रख सकते हैं यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड. तो अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो लेट्स गो. आई जस्ट हैव अ मेन मेथड and let's create an interface, and still we are using 1.8 and that interface name is A. So before 1.8 we can use, suppose we have a eat function, so we just have this kind of syntax. But in JDK 1.8 what we can do, we can define a function like go this, but make sure we are getting error. क्यों? क्योंकि अभी हमने default keyword use नहीं किया. So basically using this default keyword you can define a method. Suppose this term is used for common definition, where you have a lot of classes and they can use the same definition or common implementation. So you just define here hello, and how to call, simply you can implement like A, and then you have to override this abstract method. So like this, you need to provide some implementation over here. So I just write the statement I, and then you need to create object of your child class. This is main, and take a reference like this, and then m dot, you can call the eat function if you want to call eat, and m dot if you want to call go function like this. If right click and run, check out. So we are getting the both hi and hello. So basically in JDK 1.8 in interface you can define a default method like this using default keyword. We can also define a static method inside an interface. Suppose you want to define a static method, so what we have to do, void show, right? We are getting error. So make sure if you use default keyword, so you're not able to make it static like this, right? So if you want to make this method as static, so you need to remove the default keyword, and this method is static. And in interface everything is by default public, so we don't need to mention over here, right? And if you call, so you can call through the class name or interface name, so just a dot show, because static property we can call through the class name. And I just print any statement, how are you, right? Check out the perfect. So in JDK 1.8 also we can define a static method inside an interface. This is the new enhancement. Now we can use super keyword in case of interface using interface name. What does it mean? This term is related to
inheritance. So what we need to do, suppose I have another interface B, right? And suppose we have a static, or just leave it, we have a void eat function here, void show function here. There's no issue, right? But if main class implements both interface, so what we need to do, I need to override the both method. One is eat, another is show, like this, right? So simply you can create object of this and call anyone. Now what I have, suppose that I have a default function here, default like hi. Let's take a return type void, right? And here's a statement a. I need to copy this and just go here and paste this, right? So when you declare a method different type of, so what you need to do, you just override and create object of this and call the methods, right, accordingly. But now suppose we have a method, one is hi, another is hello. Yeah, we have a same signature, no issue. And let's print over here, right? Let's remove this method. I just have only the default method is like this. Now, so in this case, what we have a two different scenario, right? Two different method in two different interface, which implemented by main class. So what we have to do, you have to override a method like this, right? I just override the method and we don't need to call this right now. Now you can provide your own implementation, for example, like how are you, perfect, and just simply create an object of this main class as usual and call the hi method. So there is no confusion. If you run this code, so you are getting how are you. But now suppose you want to print b, you want to print b. So what is the approach? You can call hi, but if you call this hi method, so what happened, this will call this, so that is the recursive call itself again and again, right? But what I want call this, either this. So in that case, what we need to do, I just use class name, right? Hey, I want to use a method, a hi method, right? So when you try to write a dot hi, this is not acceptable. So what we need to do, this a is what, this is the superclass of main, right? So how to call parent property, you just use super keyword. So what we need to do, just call the a dot super dot I. Again, if you remove this, so again we are getting error, because there are two superclasses of this class, one is a, another is b. So you have to tell the compiler कि I want to call the hi method from a class. So in that case, you just use this signature. When you run this code and get your output a, if you want to call b, then just, I hope you are getting what is the use of super keyword, right? Now, so this is the 3 points related to the interface. Now one of the most important feature, what is functional interface? So an interface which have single abstract method only.
दैट मीन्स एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए. दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिफाइन मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड. Second, an interface can have defined method also. That means if you want to define some methods like default method or static method, so you can have a multiple, there's no issue, but only the single abstract method over there. Let's see how. I just remove this, again remove, and only one interface like this, right? Okay, now, so we have an A interface, right? So I just declare void eat function over here. Perfect. Okay, so now we have a single eat method, right? What happens if I declare multiple methods like eat, sleep, etc.? So if this interface is function interface as per rule, no. But how can I decide that which interface is functional or which interface is non-functional? So basically in Java we have a varieties of interface kind of. One is marker interface, right? Marker interface is nothing, just used for mark, like interface P, and there's nothing. An empty interface is called marker interface. So this is the kind of one where this kind of interface is used to inform either JVM or particular code if this can be do or this cannot be do with this interface. So this is just for marking. Another we are talking about an interface which have different kind of method declaration. So like void eat, void sleep, etc. This interface must be defined by this child. If anyone, कोई भी अगर इसका चाइल्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है तो उसे सारे मेथड को क्या करना पड़ेगा, बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इंटरफेस contain only the declaration of all methods. Now third one is functional interface, right? We can say it's simply normal interface, right, which can have anything. Now in this functional interface what we can do, interface like D, right? D has a void and eat, right? Void eat, this is the declaration method or abstract method, right? Okay, so how can I decide this is the function interface or this one is not? So in JDK 1.8 we have an annotation that name is functional interface, right? You are not able to write this functional interface annotation with any interface. You can write this function interface annotation with that interface which is functional. So let's see, in this case there is no error, right? That means this is the perfect definition of function interface. But what happened if I add another method like show? So let's say there is compile time error, right? That means what, if this is not a function interface, perfect invalid function interface annotation, this is not a functional interface. क्यों? Because हमने इसमें एक और abstract method declare कर दिया. तो ये क्या कहता है, if you want to create your interface as a functional, then there must be one method abstract. So yes, one method is abstract, no issue, error is solved. So can we have a define method over here? Yes, we have a default keyword and let's void show. So this is also interface, function interface. Yes, because there is no error. So that function interface can also have a default method. Now next, can we have a static method over here?
like how, just for example. Again, yes, this is also a function interface. Can we have a multiple static method over here? Yes, of course, there is no issue. Can we have a method, multiple default method over here? Again, yes, there is no issue, right? This all category belongs to this function interface. So first thing is what? कि या तो आप लोग सारे फंक्शन इंटरफेस के पॉइंट्स रट लो, राइट? और या तो आप इस एनोटेशन के बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि किस केस में हमारा ये जो इंटरफेस है वो फंक्शन कहलाएगा और किस केस में हमारा ये जो इंटरफेस है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा. तो आई होप you guys understand what is function interface and what is the syntax of this function interface, right? Now let's talk about why we use this functional interface and what is the use of lambda expression. So let's, the next point is what is lambda expression. So lambda expression को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस चलना पड़ेगा, लिटिल बिट. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ suppose guys we have a two method over here. Yeah, let's see, suppose we have a one declared method. Perfect. अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रोच में हम क्या करते थे, सबसे पहले पहले हम लोग करते थे implements a, देन हमें क्या करना पड़ता था, इस eat मेथड का बॉडी देना पड़ता था. तो जस्ट लाइक दिस, and then you need to provide your own implementation over here, hi, right? And how to call, you just create object of child class like this, because इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, राइट? सो मेन डॉट वी जस्ट कॉल eat function. There is no problem, it works fine like this. Now the next scenario is what, anonymous class, anonymous inner class. हमारे पास एक इनर क्लास भी है जिसमें एक टर्म्स है anonymous inner class. Anonymous inner class क्या कहता है कि you don't need to implement this method, right? Using that anonymous inner class you can create instance of an interface. So how? अभी हमने क्या किया, हमने उसकी बॉडी को प्रोवाइड किया, देन अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन हमने उसे एक्सेस किया, राइट? नाउ अब एनोनिमस क्या कहता है कि आप न्यू ए करो. अब हमने अगर ए का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाने की कोशिश की लाइक थ्रू द कंस्ट्रक्टर, सो हमें पता है कि इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर तो होता ही नहीं है, ना डिफॉल्ट होता है ना पैरामीटराइज होता है, क्योंकि कंपाइलर उसे प्रोवाइड ही नहीं करता. तो हम अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, और हमें इसकी बॉडी भी डिफाइन करनी है. तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बॉडी प्रोवाइड करते हैं, राइट? और यहाँ पे हम ईट मेथड को ओवरराइड करते हैं लाइक दिस. हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर यूज किया बट सेमी कॉलम ना यूज करके हमने एक बॉडी डेफिनेशन को डिफाइन करके सेमी कॉलम लगा दिया. सो यूजिंग दैट वे वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट. अब चूंकि ये बॉडी हमने क्यों यूज किया, ये बॉडी हमने इसलिए यूज किया ताकि हम इस मेथड को डिफाइन कर सकें, राइट? और डिफाइन कर दिया. अब डिफाइन करने के बाद जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है, आप अपना इम्प्लीमेंटेशन यही लिख सकते हो, लाइक हाई. अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे कॉल कैसे करेंगे. तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हो वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम इसे इसमें होल्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो लाइक दिस. तो पहले का तरीका क्या था कि आप उसे इंप्लीमेंट करते थे, दूसरे का तरीका क्या था कि आप यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास आप इसे कॉल कर सकते. बट अब आता है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन विद फंक्शनल इंटरफेस. तो देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन इंटरफेस है. लेट मी चेक, देयर इज नो एरर, दैट मीन्स ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है. और जब ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है तो हम इसके साथ अब क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ लैम्डा का यूज हम कर सकते हैं, या लैम्डा के थ्रू हम इसका यूज कर सकते हैं. सॉरी माय मिस्टेक, राइट? अब कैसे, तो इस सिंटेक्स को देखो, कितने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है टू कॉल अ मेथड, राइट? अगर इसको मैं थ्रू द लैम्डा एक्सप्रेशन करता हूं तो ये कैसे होता है, you don't need to provide, because we have a non-parameterized method, so I just use empty.
and this is the expression. This is your method parameter, which is empty. I just use this. अगर ये पैरामीटराइज होता तो हम उसके हिसाब से पैरामीटर पास करते, वो भी देखेंगे. And this is the arrow which is called lambda expression, right? And in this lambda expression, that means हमने अपने इस मेथड के सिग्नेचर को डिफाइन कर दिया. अब हमें क्या करना है, अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है. So let's copy this code and paste over here, right? अब ये पूरा इतना हमने काम कर लिया. अब ये क्या करता है, ये इसी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. So let's copy and comment this code for now, and let's hold it. So what are the implementation you are doing here? In the multiple lines, you just have a normalize. That means optimized way में आपने same implementation को provide कर दिया. And how to call this method again? You just call it, and let's see the output. Perfect. So lambda expression basically करता क्या है? Let's understand. Lambda expression is an expression to optimize your code. Clear है guys? That means इसने क्या किया, जो हम मल्टीपल लाइंस में किसी भी टास्क को अचीव कर रहे थे, वो हमने एक ऑप्टिमाइज वे में टास्क को अचीव कर लिया. तो पहला डिफरेंस क्लियर है. लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई ओनली विद द फंक्शनल इंटरफेस. लैम्डा एक्सप्रेशन किसके साथ अप्लाई होता है? सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ. अगर ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं होता तो आप इसके साथ लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते. तीसरा पॉइंट, लैम्डा एक्सप्रेशन कैन बी पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज. एज आई टोल्ड यू, यहाँ हमने नॉन पैरामीटराइज यूज किया है. क्यों? क्योंकि हमारे मेथड का जो सिग्नेचर है वो नॉन पैरामीटराइज है. बट सपोज करो ये मेथड क्या कर रहा है, कोई एक नंबर ले रहा है इंटीजर टाइप का, राइट? अब ये कैसा हो गया? पैरामीटराइज. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट पास नंबर और यू कैन यूज आई. दैट मीन्स हम इस मेथड में क्या करेंगे, एक रन टाइम पे नंबर देंगे और उस नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है. सिंपल एज दैट. अब जब हम मेथड कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं. सपोज मैंने यहाँ 10 दे दिया. सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट. हाई 10. दैट मीन वॉट एवर द आर्ग्यूमेंट यू आर पासिंग ओवर हियर, go to this and this will use here. Suppose again you have another method, another number like this. You just comma j, and here you want to perform addition, so plus j including brackets like this. Now you have to pass two numbers because your method get two numbers, right? So I just passed 10 and 10. So what is the output? I 20. Perfect. So syntax is like, this is the empty parameter. Syntax no parameterize. Syntax is like this. अब यही फंक्शनल इंटरफेस था, यही आपका लैम्डा एक्सप्रेशन था. तो दिस इज द अ बेसिक इंप्लीमेंटेशन, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक इंट्रोडक्शन. अब नेक्स्ट आने वाली सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके कुछ फंक्शन देखेंगे थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन. तो आई होप गाइज यू आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 8. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट like and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye.